Hello cyber warriors, welcome to Cyberlok YouTube channel. In this video we will talk about what should you do if you think your machine is compromised or if you feel someone is spying on you using digital eyes. कभी कभी ये थॉट आता होगा माइंड में, जैसे कि मेरा डिवाइस हैक तो नहीं हो गया या कोई मुझे स्पाई तो नहीं कर रहा. तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर what is cyber swachhta kendra, what should you do if you think your system or phone is hacked, how to install K7 security to assess your system's security posture, and how to remove or clean bots or malware if found, and best practices to keep your devices safe and prevent future infections. So let's move on to official website of Cyber Swachhta Kendra. So what is Cyber Swachhta Kendra? साइबर स्वच्छता केंद्र एक बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है. ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है. नाउ व्हाट इज़ द गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव? द गोल of this initiative is to create a secure Indian cyberspace. This website provides information and free tools to help secure their systems and devices. The system is operated by Indian Computer Emergency Response Team, that is CERTIN, under the provision of Section 70B of the IT Act 2000. Okay. Now why have I reached this page? You have reached this page because you think your computer system or device is probably infected with malware called a bot, and it could be a part of a botnet. So what is botnet? ये एक नेटवर्क होता है मल्टीपल इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का, जो हैकर के कंट्रोल में होता है. अगर आपका सिस्टम बॉटनेट का पार्ट बन गया तो आपका पर्सनल डेटा स्टील हो सकता है, आपका सिस्टम स्पैम भेजने के लिए यूज़ हो सकता है, एंड ऑल्सो दूसरे सिस्टम्स पर साइबर अटैक्स लॉन्च करने के लिए भी यूज़ हो सकता है. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड आई डू देन? सिंपल, आपको अपना सिस्टम को स्कैन करना होगा for any potential malware or malicious softwares using recommended tools. Here a download button is there. Click on the download button to download free bot removal tool recommended by CERTIN. Okay. In this video we'll learn how to use K7 security or quick heal security to clean and check a Windows machine for malicious software. On this website you will see these tools listed. For this demo I will use K7 security. डाउनलोड पर क्लिक करो, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे ऑफिशियल पेज पर. वहाँ पे आपको बॉटनेट के डेफिनेशंस भी मिलेंगे. इफ़ यू वांट यू कैन रीड देम. K7 बॉट रिमूवल टूल स्कैन करता है, मलिशियस बॉट्स एंड रैंसमवेयर को भी रिमूव करता है, सारे वेरिएंट्स को. अप टू डेट अभी तक है सब. क्लिक डाउनलोड हियर. वंस द फाइल इज़ डाउनलोडेड, फोल्डर में जाओ, डबल क्लिक करके रन करो. ओके. क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट. स्टार्ट द कंप्लीट स्कैन. अब ये पूरा डिस्क स्कैन करेगा मालवेयर और बॉट्स के लिए. ओके. थोड़ा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड, बिकॉज जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होंगे उतना थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके. सो चिल करो, एक कॉफ़ी ले लो और वेट करो स्कैन के कंप्लीट होने का. आफ्टर द स्कैन इज़ completed, here you can see the K7 has found malicious file. Save the results. It will be saved in text file. You can clean it from here. In this way you can clean your Windows machine for any potential malicious softwares or bots. Okay. So that's it for this video. In next video we will download and scan a mobile device for any potential malware or bot using security solution which is recommended by CERTIN and Cyber Swachhta Kendra. So guys,
मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि ज़्यादा ऑडियंस को रीच हो सके ये एक्सक्लूसिव कंटेंट, and hit the bell icon so that you don't miss the latest updates. Okay, so if you found this video helpful, drop a like and comment below with your questions and what do you want in the next video and next series. कोई भी question. Okay, see you in the next one. Happy hacking, guys.